Yes, guys, send the answer. Sir, I have sent. All right, I'm going to explain now. So, which is the greatest negative integer, Thala? Sir, greatest integer. Greatest negative integer. Sir, plus, sorry, sir, -1. -1. And smallest positive integer? Sir, +1. +1. So, sum of -1 plus 1 will be 0. So, a number is -6 less than sum. तो मतलब 0 माइनस -6. तो क्या हो जाएगा 0 + 6 विच इज 6. Yes, sir. Understood? Understood, yes or no? Yes, sir. इसमें क्या कुछ प्रॉब्लम है? सबका -2 तो आ रहा है. अगर आप किसी भी रो कॉलम को ऐड कर दो तो यहाँ पे -2 आ रहा है, यहाँ पे -2 आ रहा है, यहाँ पे -2 आ रहा है. कैसे भी ऐड करो -2 आ रहा है. क्या प्रॉब्लम है इसमें? यस, अधिराज, क्या प्रॉब्लम है? Adiraj, unmute. If you have a doubt, beta, you have to unmute yourself. What's the problem in Sir, I this? still didn't understand. बेटा कैसे भी ऐड तो करो. व्हाट इज 8 + 9 -19? क्या होगा? 8 8 + 9 17. 17 -19 क्या होगा? Sir, -2. -2. तो यहाँ पे -2 हुआ. अब यहाँ पे ऐड करो 19. -19 + 19 0. फिर -2, फिर -2 होगा. तो फ्रॉम एवरीवेयर यू आर गेटिंग -2 ओनली ना. Yes, sir. तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है? ऐसे ऐड कर दो तो भी -2 आएगा. सो किसी भी तरह आप सम और कॉलम को ऐड करो, यू आर ऑलवेज गेटिंग -2 ओनली. ओके. Yes, sir. तो बेसिकली अगर वो यहाँ पे पूछे क्या वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे आएगी. इफ दे आस्क दिस वैल्यू विल बी हाउ मच. ये -5 हो गया, -6. बट इफ दे आस्क यू द सम कितना आ रहा है, दैट इज -2. Okay, ओके. sir. बिफोर द ब्रेक विच चैप्टर वर वी डूइंग?
तो व्हाट इज अ रेशियो? मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था रेशियो चैप्टर्स का कि नहीं दिया? No, sir. नो। अच्छा, हम लीनियर इक्वेशन कर रहे थे। वी हैड टू स्टार्ट वर्ड प्रॉब्लम्स। हमने वर्ड प्रॉब्लम्स की थी लीनियर इक्वेशन की? नहीं की थी, है ना? तो दैट वी कैन डू लेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन स्टार्ट विद रेशियो का क्वेश्चन। चलो, सो रेशियोज आर जस्ट लाइक फ्रैक्शंस। जैसे फ्रैक्शन में मैं 3/4 लिखता हूं, सो विच मीन्स what does 3/4 means? 3 parts out of 4. It means 3 parts out of 4, right? So in the ratio form I write it like this: 3:4. Same thing, 3/4 can be written as 3:4 also. So what is a ratio exactly? A ratio compare two numbers, compares two numbers. It has no unit. Ratio का कोई unit नहीं होता. For example, let's take an example. In a class of 35 students, there are 12 boys. So find the ratio of boys to girls. Find करो guys, मैं example देता हूँ. So there are 12 boys. So girls obviously will be 23. Any doubts? So the ratio of boys to girls will be 12:23. Because they have asked the ratio, I will write it like this. Clear हो गया? Give me the ratio of girls to boys. C part, boys to total number of students. करो guys. सर हमें ऐसे ये 12 और ये बीच में 2.23 ऐसे करके भेजना है या ऐसे ही करके भेजना है, ऐसे ही करके भेजना है. Excuse me, sir. Yes. Sir, we have to send the answers of B and C. Yes, you have to send the answers of B and C. Sir, I do not understand what you mean by girls to boys. बेटा ऊपर देखो, बॉयज टू गर्ल्स का क्या मीनिंग है? Okay, रेशियो sir. ऑफ गर्ल्स टू बॉयज. Yes, sir. Okay. So it is comparing the number of boys and number of girls in a class. Sir, there is one. What are you saying? I joined like in a few minutes ago. We are doing maths, beta. Welcome to the class. Annie and Sifu, start your camera. So sleeping होते, what's my answer? CR7 फिर delay. अभी न्यू टॉपिक स्टार्ट हुआ है, फिर डिले हो गया. स्पीक करो, फर्स्ट आंसर स्पीक करो. CR7 क्विकली. Sir, I just got disconnected. I didn't understand. उदय, फर्स्ट आंसर स्पीक करो. The 23 girls. 23. Girls. बेटा रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज क्या होगा, मुझे ये बताओ बस. Sir, 12 by 22. सो 12 तो बॉयज अपॉन, अगर बॉयज ऊपर हैं तो 12/23. गर्ल्स टू बॉयज है तो 23:12. 23 by 12.
23:12 वी आर डूइंग रेशियो. इसको हम डॉट्स को क्या कहते हैं? इस टू. नाउ बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स बताओ. नेक्स्ट आंसर बताओ दे क्विकली. Okay, sir. So 12 boys. बेटा मुझे रेशियो बताओ ना. 12:, what? So 12 is to 23. No, wrong. CR7, would you like to correct him? Sifu Nani, would you like to correct them? 12:35 because total students 35 है. अब गाइज ये तो आंखों से देखना पड़ेगा ना कि टोटल स्टूडेंट्स 35 दिए हैं. Isn't it? Yes or no? Saliba and CR7 and Sifu. Yes, sir. गाइज एक्टिव रहना पड़ेगा आपको क्लास में. अगर क्लास में सो जाओगे तो कंसेप्ट नहीं आएगा. सोया मत करो बिल्कुल क्लास में. जिसको सपने देखने हैं क्लास के बाद देखा करो. I know we have a lot of daydreamers in our class. So guys, so who will read? Saliba, please read. The ratio of two quantity is of the same kind and in the same unit is the fraction that one quantity is of the other. The ratio A is to B is the fraction A by B, written as A B. Terms of Written as A is to B. A is to Written B. as A is to B. Adiraj, read the next para. So terms of a ratio. Ratio Ratio. है. Rato है. Whatever it is. Whatever it is. रेशियो अभी कितनी बार बोल दिया मैंने? 10 टाइम्स 20 टाइम्स अभी बोल दिया. रेशियो है. टर्म्स ऑफ अ रेशियो. नेक्स्ट. Ratio A is to B. We call a वी we कॉल ए. नहीं ए. ई नहीं कर रहे हैं. ABCD कर रहे हैं. we call A the first term or antecedent कॉन्टेस्टेंट नहीं है. एंटीसीडेंट. sir what एंटीसीडेंट. जो फर्स्ट टर्म है इसमें फर्स्ट टर्म कौन सी है? ए. इसको हम क्या बोलेंगे? एंटीसीडेंट. आगे and पढ़ो. B the second term of consequent. कॉन्सिक्वेंट. In the ratio 3 is to B is to 4, the first term or an antecedent is 3 and the second term or con, cons, consequent is 4. ओके. सुनानी जी आगे का रीड करो. नहीं ये मत करो. अब सिंपलेस्ट फॉर्म आपको पता है. फ्रैक्शन को कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं? 75. सपोज आई गिव यू अ फ्रैक्शन 8/12. तो कैसे करेंगे? वी कैन डू 4 2s are 8, 4 3s are 12. सेम वे रेशियो को भी करेंगे. अगर आपका रेशियो है लेट्स से 5:10, तो इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दो 5/10. देन यू विल गेट 1/2. सो रेशियो विल बी 1:2. तो 5:10 रेशियो था. मैंने उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, फिर उसको सिंप्लीफाई किया, फिर वापस रेशियो फॉर्म में लिखा. ट्राई द फर्स्ट क्वेश्चन.
CR7, speak your answer. Sir, 3/5. 3:5 रेशियो है ना, तो Yes, 3:5 बोलेंगे. 3:5. नेक्स्ट एग्जाम्पल 2. Charlie Power, do the question. So 60/75. 15 fours are 60, 15 fives are 75. Ratio will be 4:5. Batman क्या हो गया? Batman Princess के 2. Sir, I got disconnected. Sir, I saying 12/15. 12/15 you sent. Sir, by dividing by 5. बेटा फिर दोबारा से करना पड़ेगा ना आपको. 12/15 को दोबारा से 3 से करना पड़ेगा. Now what will happen if you want to express in the simplest form and the ratios are in the form of fraction? तो गाइस जो रूल फ्रैक्शंस में अप्लाई होते हैं वो रेशियोज में भी अप्लाई होते हैं. एक रूल होता है फ्रैक्शंस का, वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर. ये रूल सबको पता है? यस और नो? अब बिकॉज ये रेशियोज फ्रैक्शंस में है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करना मतलब मुझे होल नंबर में चाहिए. What does it means converting into simplest form? Means I want the ratios in a whole number. So what will we do? There is a method. So can anyone tell me which number I'll multiply the numerator and denominator to get the, or I will multiply the antecedent and consequent to get the ratio in whole number? CR7, look at the screen. Don't look at your ceiling. आपने new shave किया ऐसा लग रहा है. So which number I'll multiply the antecedent and consequent, guys? Can anyone tell me? चलो मैं बताता हूँ. हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 12 into 1/4 is to 12 into 1/6. ये कितना हो गया? 3. ये कितना हो गया? 2. आंसर आ गया 3/2. Now why did I multiply with 12? Why did I multiply with 12? Sir, because the HCF is 12. Sir, No, to make them whole numbers. because the LCM is 12. Not the HCF, but the LCM. समझ आया guys? No, Yes or sir. no? बेटा 4 और 6 का LCM 12 होता है तो मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को. ओके. Yes, sir. नेक्स्ट वो कैसे करेंगे? फर्स्ट यू विल कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर. आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू इम्प्रॉपर यू विल मल्टीप्लाई विद व्हाट? विद द एलसीएम ऑफ 3 and 4. चलो ट्राई करो नेक्स्ट क्वेश्चन.
Sir, after getting the whole numbers, do we have to simplify them? So Azu भाई, after finding the LCM, when we multiply, उसके बाद multiply करोगे तो cutting होगी. Obviously, your purpose is to remove the denominator. Sir, will we multiply the LCM with this number that we get? With both the numbers, we'll Okay. multiply the LCM with both the numbers. Okay. Sir, can I get my laptop's charger? You want to get your laptop's charger? Okay. Sir, I understood my mistake. Can I Sir, set it? sir, can I go to the washroom? Peter, why do you want to go to the washroom? Sir, to wash the room. To wash the room? Yes, if your answer is correct, you can go. तो चलो गाइस देखते हैं. ये है 25/3, ये है 25/4. So LCM is 12, so I will multiply with 12. ये CR7 होते कभी आंसर क्यों नहीं देते अपने आप? Sir, दे दिया. 12 into 25/3, 12 into 25/4. So I will get 100 is to 75. Right? अब इनको simplest form में देना है. So you can do 100 upon 75. That will be 4/3. So your answer would be 4 is to 3. All right. Yes or no? Yes. कौन था? उदय, एनी एंड CR7 समझ आया? Yes. Yes, sir. Next करो guys first part. अब obviously when you find the ratio they should be in the same units. जैसे ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है. So both of them should be in meters or both of them should be in centimeters. So we have to do the first one, right? Yes.
Sir, I just came right now. So what, sir, which question are we doing? We are doing the first question. Welcome. And I will tell you once again, the units of both the antecedent and consequent should be same. And you have to do in the lowest term also. All right, guys, let's see. So we have 2 meters, which can be written as 200 centimeters upon 24 centimeters. Then I can divide it by 4, 6 are 24, and here I will get 50. Then I can do it with 2 one more time. Here I will get 3, and here I will get 25. So the ratio will be 25 is to 3. Sir, I sent All right. this So you send 25 this. centimeters. Beta, I there will be no accidentally. units. There will be no units. Ratio has no units. अगर हमने पढ़ा हो आपने ध्यान दिया हो तो do the second part, guys. जल्दी Sir, से won't second it part. be 0.25? बेटा कैलकुलेटर यूज कर रहे हो क्या? No, 0.2 sir. तो फिर 0.25 कहाँ से आ जाएगा? Sir, won't we do it in meters? मीटर्स में करोगे तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं हो जाएगी? 2/0.24. फिर इसको 100 को ऊपर ट्रांसफर करोगे बिकॉज ये 24/100 हो जाएगा. ये 100 ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, 200/24 होगा. So it's always easier to go to a smaller unit when you are multiplying or dividing. Okay, sir. Azu bhai, what's the problem? Typing.
ऑल राइट। उदय फिर क्यों गलत हो गया भाई? Sir, can I just tell the answer? No. So 3 days means how many hours? 72 hours. Because I will multiply by 24. 72 upon 30. So 6 5s are 30 and 6 12s are 72. So ratio will be 12:5. Guys, do the third and the fourth question. All right, Uday, Warrior, Veda, Sifu, Nani ji. Sir, I have a question. Yes. Sir, isn't it 13? How beta? 6 10s are 60. I did 11s are 66. 12s are 72. Sir, I did 72 to 30. Then it became 36 and 15, then 13 and 5. Oh, sir, I understood. You are the warrior of Punjab. You went into battle with Pakistan, I was told. I'm so sorry. Or can I go to the washroom? Why? Sir, prepare them. Acha, you are Nani na, and you have given the correct answer also, so you can go. Because warrior, is your head aching? No, sir. So they Riva, Annie, beta one answer and Batman. One answer हुआ है, आप one send कर दो. Saliba, Riva, and Batman. Send. If you have sent, if you have done one question, please send for one question. Time is up. उदय one question भी नहीं हुआ आपका. Sir, So मैं complete 1000 करने meter वाला हूँ. upon 360. क्या कर रहे हो आप? So I can do it with 4. I will get 25 and 9. So ratio will be 25:9. Then 1000 upon 150. First I will cancel out the zeros. Then 5 20s are and 5 3s are. So ratio हो जाएगा 20:3. Batman, Hidden Guy, CR7 and Uday. क्या प्रॉब्लम है इसमें? सालिबा क्या प्रॉब्लम है? अनम्यूट करके स्पीक करो.
सर मैं अभी टू से मैं कर सर मैं टू हाँ, से कर रहा था तो और बेटा टाइम अभी ज्यादा लगेगा, मिस्टेक के चांसेस भी ज्यादा है, इतने डिविजन्स करोगे। बड़ा नंबर लोगे तो जल्दी होगा। ओके सर। नेक्स्ट। छोड़ो यार, ये तो हमने बहुत कर लिए, नेक्स्ट कंसेप्ट करते हैं सीधे। सो फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू डिवाइड ₹180 between Saliba and Riva and Bassi in the ratio 7:8। तो कैसे करेंगे? पहले आप ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। ट्राई करो 2 मिनट्स। चलो गाइज, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो देर आर टू मेथड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो मेथड वन पहले मैं बताता हूँ। सपोज यू हैव टू नंबर्स, लेट से मेरे पास नंबर्स हैं 40, 50। तो 40:50 को मैं 4:5 भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो दैट मीन्स मैंने 4 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा और फिर 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा। तो आई कैन राइट इट एज 4x एंड 5x ऑल्सो। अगर मेरा रेशियो 4:5 है, आई कैन राइट इट एज 4x एंड 5x ऑल्सो, बिकॉज मेरा ओरिजिनल नंबर तो कुछ मल्टीप्लाई करके आएगा 4 को और 5 को, और सिंप्लीफाई करूंगा x कट हो जाएगा। सो व्हाट आई मीन टू से इज, अगर रेशियो 7:8 है तो आप इसको हमेशा 7x और 8x के फॉर्म में ही लिख सकते हो। तो ऑलवेज यू कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 7x and 8x। यू कैन मल्टीप्लाई x and write it as 7x and 8x। तो 7x प्लस 8x इज इक्वल टू 180। अब लीनियर इक्वेशंस हमने अच्छे से किया, तो ये बनना चाहिए क्वेश्चन। 15x इक्वल्स टू 180, x equal to 180 divide by 15, that will be what? 12. If x is 12, then 7x will be equal to 7 into 12, that is 84, and 8x will be equal to 8 into 12, that is equal to 96.
So total will be what? 180. This is method 1, which is the linear equation method. This method is by solving the using the linear equations. Once again I will explain. 7:8 था तो मैं रेशियो को 7x और 8x ले लूंगा. Because their total is 180, I will take 7x plus 8x equal to 180, 15x equal to 180, x equal to 180 by 15, that is 12. Is x is 12, 7x will be 7 into 12, 84, 8x will be 8 into 12, 96. Understood? Saliba, understood? Yes or no? Yes. Up first of all, you use this method to solve one question, then I will explain the second method also. To solve example 6. What is happening, Riva, T2, Sifu, hidden guy? Should I explain one more question? No, No, sir. sir. Saliba, Saliba. Yes, sir. Pita, are you doing? Or are you just doing like this, like this? No, sir. तो करो बेटा, मेरे बेटे करो. Riva, at the end, you have to give the value of 5x and 7x. Okay, sir. जल्दी करो guys, जल्दी करो. उदा उदास मत हो भाई और आंसर दे दो. चलो guys, I am explaining. So if this is ratio is 5:7, इसको हम 5x और 7x मान सकते हैं. इतना ठीक किया था उदय. उदय CR7 हिडन गाय ये Yes, किया sir. था. Yes, sir. तो Yes, बस sir. 5x plus 7x equals to 840 ये किया था हिडन गाय. Yes, sir. आप हिडन गाय हो. 12x equal to 840 किया था इतना. x equal to 840 by 12, 70. If x is equal to 70, then 5x will be equal to 5 into 70. That is equal to 350. And 7x is equal to 7 into 70. That is equal to 490. Have we understood? Have we understood, guys?
Yes or no? So two numbers are 350 and 490. बोलो भाई CR7 हिडन गाय, अपना Yes, sir. मुंह खोलो, जीवा का प्रयोग करो Yes, sir. और उत्तर दो. तो नाउ आई विल एक्सप्लेन मेथड नंबर 2, जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट जनरली ये मेथड यूज होता है, मेथड 2 यूज होता है फॉर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. आई डोंट नो व्हाई, बट होता है. चलो गाइस, मेथड 2 में क्या करते हैं हम? टोटल रेशियो पार्ट्स लिखते हैं. सो व्हाट विल बी टोटल रेशियो पार्ट्स? That will be 7 plus 8, that is equal to 15. तो रेशो और फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट नंबर, फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट नंबर क्या होगा? सो दैट वाज 7x, तो 7/15. ये मैंने फ्रैक्शन बना दी. अब अगर मैंने फ्रैक्शन बना दिया तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? विल मल्टीप्लाई. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर? 7/15 ऑफ टोटल कितना था? 180. ऑफ मींस मल्टीप्लाई. तो 7/15 multiplied by 180 and I will get 84. So see, we get the same answer. Whichever method we use, first number was 84, here also we get 84. Now second number we can easily find by subtracting from 180, but let's say मैं subtract नहीं कर रहा, तो क्या करेंगे? सेम चीज रिपीट करेंगे. फ्रैक्शन ऑफ सेकंड नंबर, total ratio parts are 15 only and my second number has 8 parts out of it. 8/15. What will be the value? That will be 8/15 of 180. Similarly solve करो, 12 आएगा, 12 into 8 96 आ जाएगा. So understood this method guys? Yes or no? So मैं एक बार और explain कर देता हूं. In this method we find the total ratio parts. तो मेरे रेशियो था 7:8, तो मैं टोटल रेशियो पार्ट्स फाइंड करूंगा. 7 + 8 15. फ्रैक्शन 7/15 हो जाएगा. वैल्यू 7/15 ऑफ 180. So once again, total parts are 15. Fraction of second number will be 8/15. Value 8/15 of 180. Simple. Find the total ratio parts. Find the fraction. Find the value. Contact bus C. These are the steps. समझ आ गया सबको? Yes or no? Yes, sir. Yes or no, guys? Yes, sir. Sir, I use this method only. How do you know this method? Sir, I figured it out. You figured it out? My goodness. I can't even imagine how a little child like Princess can figure it out. How many girls are there in the school? ठीक है. ये क्वेश्चन देता हूँ guys. Now this question you have to solve by this method too only. In a school, the ratio of boys to girls is 7:5. If there are 2,400 students in the school, then how many girls are there in the school?
So you have to use method 2 only. Don't use method 1. ग्रेट वॉरियर ऑफ पंजाब. वॉरियर, आपने पाकिस्तान के कितने प्लेन्स डाउन किए थे ड्यूरिंग द वॉर? Sir, 0 because I was not there and I am not a warrior. You are a warrior, beta. Everyone knows about that. Beta, did you ask Mama for the zipper? And he's smiling. Nah, it's fun to trouble warrior, no? Sir, I sent the wrong answer. Can I send again? Yes, you can send again because Sir, because what? he understood his mistake and this is not MCQ type, so you are allowed more than one try. Yes, sir. Chalo guys, time up. So what I will do is, first step क्या होगा? Total ratio parts. So total ratio parts, that will be 7 plus 5, that is equal to 12. So fraction of girls सीधे निकाल लेता हूं मैं, तो मुझे boys से मतलब ही नहीं है. Fraction of girls, that will be equal to 5 upon 12. Value will be equal to 5 upon 12 of 2400. That will be 200. 200 into 5 is 1000. Batman, कहाँ mistake हुई? Mistakenly took the ratio of boys. Okay. So, all right, kids, that's all for today. I'll see you in the next class. Bye bye. Enjoy. Have a nice day. Bye bye, kids. Bye bye. Thank you. Bye bye. Boys.